Guys, welcome to your प्यारा चैनल द स्टडी हब। क्लियर? अभी तुम 12 में हो, जस्ट 11 ख़त्म हो गया, 11 ख़त्म करके 12 में आया। सर क्या सर, फिर 11 का नाम ले लिया, 11 में सब टाइम बर्बाद कर दिया ना। अरे कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं यारो, कोई बात नहीं दोस्त, कोई मैं प्यारा स्टूडेंट हम है। जस्ट शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट नए अपडेट के लिए। आई एम है। So let's start. Today I will discuss about the new chapters of class 12 का first chapter the solution. Clear? Physical chemistry का first chapter the solution. क्या है, बहुत गर्मी है ना, पीना है। क्या ड्रिंक्स है, इसमें नमक भी है, शुगर भी है, ओके, और पानी भी है। वो थोड़ा थक गया ना, ओके, रख दो। चलो चलो प्यारे बच्चों, आज क्या स्टार्ट करेगा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मतलब इट इज द मिक्सचर ऑफ two or more than two क्या? Two pure substance. It is homogeneous mixtures of two and more than two pure substance in which all the components are equally distributed among the solutions. Clear? The homogeneous का मतलब क्या है? What is homogeneous? Homogeneous का मतलब पहले जो किया ना हम, देखिए ये क्या है, इसमें नमक है। Can you see the sugar? Can you see salt? Only water. That means the whatever sugar and salt is being given out here, all are dissolved and taste in is everywhere, every part of the solution is equally. That is the component, each components are equally distributed throughout the solutions. That is the homogeneous solutions. यह है homogeneous. That is all the components, that is sugar out here, salt out there, equally distributed, and this is known as the solution, and it is a homogeneous mixture. Homo means all the components are distributed equally among all the solutions. Okay, this is the homogeneous solutions. So many examples are there. Homogeneous solution क्या है? और क्या है? कोई सॉलिड भी है, थम्स अप, कोका कोला, ये भी है। और क्या है? कोई ब्रश, दैट इज एलॉय, वो जो मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू मेटल्स, दैट इज द solution, homogeneous solutions. The solutions can be categorized homogeneous and heterogeneous. होमोजीनियस, हेटेरोजेनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब হচ্ছে इक्वली सेम, होमो, और हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस दैट इज इट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड की components, all the components of the solution equally distributed, but in case of heterogeneous it is not equally distributed. Mixture masala और कि चना मसाला, या एक किया, there is no, the components all around the mixture is not equally distributed. कोई ज़्यादा है, कोई कम है, थोड़ा कोई कम, थोड़ा कोई मूंगफली ज़्यादा होगा, गठिया थोड़ा कम होगा, कहाँ पर नमक थोड़ा बेसी, नमक थोड़ा कम. This is the heterogeneous solutions. So depending upon the mixture, homogeneous mixtures or solutions can be categorized broadly three types. And one thing you can remember, in a solution we can
say that there is different type of solution, binary solution, ternary solution, quaternary solutions, but here we only discuss about binary solution in which two components are there. One is solvent and another is solute. Solvent plus solute equals to solution. Clear? Solvent plus solute equals to solution. Solution के अंदर जो ज़्यादा में है, जिसका अमाउंट ज़्यादा मोर होगा वही है सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट लेस होगा वो होगा सल्यूट. द सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन. क्लियर? इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा क्या है, पानी, वाटर, तो वाटर या होगा सॉल्वेंट. थोड़ा क्या दिया हमने, नमक दिया. ये क्या है, नमक. हम इसको डिजोल्व किया इसके अंदर, तो नमक क्या है, ये जो नमक ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये है सल्यूट. इफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट ज़्यादा होगा तो ये भी होगा सॉल्वेंट. ये ज़्यादा हो, जो ज़्यादा होगा वही है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट मतलब ये नहीं ऑलवेज पानी होगा, ऑलवेज वाटर होगा, नहीं है. सो सॉल्यूशन कैन बी क्या है, थ्री टाइप्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. Clear? Solid solution, liquid solution and gaseous solution. Solid solution, liquid solution, gaseous solutions. Clear? तो solid solution में क्या होगा, solvent होगा solid. gaseous liquid solution में क्या होगा, solvent होगा liquid, and gaseous solution में solvent होगा gas. You must remember it. So you have to remember this. Solid solution में solid होगा क्या, solvent. Any solid A में होगा solid plus solid solution, solid plus liquid, solid plus gas. Here solid is the solvent out here, and solid, liquid, gas, in this every case it will be solute. The solid solution, solid liquid solution, solid gas solutions. In case of liquid solid solution, liquid solution, liquid gas solutions. इसमें gas solid solution, gas liquid solution and gas solutions. Clear? So you know three types, nine types of different solution. You can know, there is various examples. I know you know. That's gaseous solution, air and gas solutions. Gas and hydrogen gas and palladium, gas and solid solutions. Okay? Solids, alloy. Liquid solution तुम्हारा है. ओके, पता है सबको लिक्विड सॉल्यूशंस पीते हो. कोई अल्कोहल में वाटर डालो, कोई वाटर में अल्कोहल डालो, मिल्क में पानी डालो, पानी में मिल्क डालो. किस में ज़्यादा डालना है यू ऑल नो. है, ड्रिंक का अंदर पानी ज़्यादा देगा ना, पानी का अंदर ड्रिंक का ज़्यादा दो. हैं, कैसे पिएगा तो तुम लोग वो जो उसका मैटर हो, हम लोग को नहीं है. तो लिक्विड सॉल्यूशंस है, लिक्विड सॉलिड में है. तो सब सॉल्यूशंस ऐसे एग्जाम्पल. सो बहुत सारा एग्जाम्पल है. आई एम विल नॉट डिस्कस आउट हियर, ऑल यू नो. तो नेक्स्ट come the strength of solution. Next come concentration of solutions. concentration का मतलब क्या है, कोई solution है ज़्यादा, वो ज़्यादा डाइल्यूट होगा, कोई concentration होगा. that means कोई solution solvent के अंदर थोड़ा solute होगा और solvent के अंदर ज़्यादा solute है. दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन कोई कम है, कोई ज़्यादा है. तो इसको डिटरमिन कैसे करना होगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. जो एग्जाम्पशन करना होगा तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. जो ये परफेक्ट यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल परसेंटेज ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन क्या है, वो क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन में बाय डिटर्मिनेशन में वो हम लोग को वी कैन डिटरमाइन इट. सो देयर आर वेरियस methods so that you can find out
the percentage, the concentration of solution, a concentration of the solution. That is the part you have to find out the amount of solute and solvent in a solution. What are the method? Name the different method. See, first mass percentage. Mass percentage. Okay. Next होगा volume percentage. That is mass volume by mass by volume और mass by mass. Okay. तो mass percentage है, ppm है, volume percentage है, ppm parts per million. I will discuss briefly all in a short time, because you have learned in class 9, 10 also SSC board and also 11 also. ppm mole fraction में है. ओके. और भी है, तो क्या होगा? मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन. और भी है मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, फॉर्मालिटी. So many things are there. I will discuss step by step. Next comes clear mass percentage. How do you find out the mass percentage of a solution? That is mass means W by W. The total mass of solvent, or not only solvent, mass of the components, whatever components you want to find out the concentration. The mass of solvent by total mass of solution into 100. हो गया, कुछ ही नहीं है. नेक्स्ट वॉल्यूम परसेंट, W by V, mass of solvent by total volume of the solution. Okay, that is volume of solvent by total volume of solution into 100. V by V, W by W, V by V. And next one is correct in case of medicine. उसमें परसेंटेज जो कंपोनेंट है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ दैट केस, इन दैट केस W by V, mass of the solvent, mass W by V, mass of the solvent by W by V, mass of solvent, mass of solute by total volume of solution into 100. It is done in case of medicine preparation, medicine के लिए. Clear? So this is the thing you have to know, how to find out the mass percentage, volume percentage, mass of solvent, total mass of solution into 100, volume percent, volume of solvent, total volume of solution into 100. Okay. Here you can also write solute. This is solute. Now ppm, इसका मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन क्या है? जब कंसंट्रेशन क्या हो, खूब थोड़ा लेस, दैट मीन्स 1:10, concentration 1:100, concentration 1:1000, concentration gradually decreasing, 1:10 to the power 6. 10 to the 6 means million, the parts per million. Job when the concentration that is too less, solution में solute का percentage too less, in that case you can use this term parts per million. It is
you can write ppm equals to number of moles in one component by moles of solution into 10 to the power 6. Number of moles in one component. Clear? Number of moles in one component. Total moles of the solution, total volume of solution into 10 to the power 6. Clear? But total number of parts you can if you convert it parts, if you can say anyway, because the problem in numerical problems there may come the changing the words. If number of parts, you can write number of parts in one component divided by total number of parts in the solution into 10 to the power 6. पार्ट्स होगा तो यहाँ पर पार्ट्स होगा इंटू 10 to the power 6. तो इतना ट्रेस एलिमेंट के लिए दिस यूनिट कैन बी यूज्ड. ट्रेसर एलिमेंट के लिए इन केस ऑफ यू हैव टू फाइंड आउट द हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब कि ppm, इसका यूनिट हार्डनेस का वाटर you can write. Yes, the ppm. Next come mole fraction. Mole fraction. What is mole fraction? Most important, very important thing, mole fraction. Okay, be serious. Most of the numerical sums should come from here. Mole fraction. Number of moles of component, total number of moles in all the components. Number of moles in the components, number of moles. Out here, what is written? Mole. That's why it will be number of moles in any one component. Solute होगा, भी solvent होगा. One component. I am writing in short form. Total number of moles. Total number of moles. Okay. In solution. Moles. Mole fraction. Okay. The number of moles in one component. Clear? Total number of moles in the component. This is known as the mole fraction. Total number of moles in the solution hoga. Okay. Whatever you can write. Suppose number A or B, A solvent, B solute, A solvent, B solute. ये दोनों solvent में number of moles Na, इसका Nb. Clear? Number of moles in this Na, number of moles this Nb. The total number of moles, if suppose you want to find out the mole fraction of A or mole fraction of B, then you have to this is expressed by chai na kai, chai kai, chai चा पियोगे चाय. ये चाय वो चाय नहीं है, चाय चाय. Okay, the chai is number of moles, n. Suppose you want to find out the number of moles for A, the chai A. Okay, Na plus Nb. The total number of moles in the solution and number of moles in one component. One component matlab A or B. In case of B, Nb by Na plus Nb. Yeah, this chai B. The number of moles easily find out.
the number of components by total number of moles in the solution. And you must remember, in a solution, in a fraction, always you know chai A plus chai B equals to always 1. Yes, this one plus this one, always. Chai A plus chai B always equals to 1. That means this plus this equals to 1. This plus this equals to 1. From here you can find out in any fraction of the component. Clear? Now I am discussing about vapor pressure, Vp. Vapor pressure. What is? Not VIP. Vp. Vapor pressure. Vp. So what is vapor pressure? See, this is the container. This is the lid out here. Here you are given some liquid. You can take the liquid, a solvent or solute. Maybe this is more of both are volatile, or one volatile, one non-volatile. So what will happen normally? Normally what happens? Tell me. It evaporates at a particular temperature, at an equilibrium state, and particular temperature it will evaporate. As it is evaporate, what will happen? This evaporation, that is gas, the evaporation, and it is condensed. Rate of evaporation, rate of condensation equal. You know, rate of evaporation equals rate of condensation. So what is this? Evaporate होने के बाद ये क्या करेगा? It ऊपर में जाएंगे, क्या करेगा? जाके घूमेगा, प्रेशर देगा. गैस ऊपर में प्रेशर देगा. The pressure, that pressure is known as vapor pressure. So what is vapor pressure? The pressure exerted by pressure by the vapor within the liquids at particular temperature in equilibrium state upon the lid is known as vapor pressure. And vapor pressure depends upon certain factors. What are the factors? No. Tell me. What are the factors? Tell me. No. You know. Say, vapor pressure is directly proportional to temperature. इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, डाउन एरो होगा, अप एरो होगा. क्लियर? क्यों होगा वो बाद में बोलेंगे, अभी नहीं, जरूरत नहीं है. ये थोड़ा मेडिसिन देना का क्या काम है? दर्द के लिए दर्द का मेडिसिन, फीवर के लिए फीवर के मेडिसिन, ये अभी समझने का बात नहीं है. नेक्स्ट, नंबर 2, फैक्टर 1 हो गया. फैक्टर 2, IMF नाम को सुना? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. क्या बोल रहे हैं भाई बच्चों? सर पागल हो गया क्या? नहीं. IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स among the particles of solute, particles of solvent. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का टाइटली पैक्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई. तो इसको टूटने के लिए हमको थोड़ा खींचना होगा. कैसे? आस्ते आस्ते खींचना होगा. नहीं जल्दी. और फोर्स लूज होगा तो इजिली टूट जाएंगे. क्लियर? दैट इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड. नेचर टेम्परेचर एक नेचर सब घूम के काम है. कोई बुक में है तो कोई नेचर ऑफ लिक्विड. IMF नहीं है. तो IMF और नेचर ऑफ लिक्विड उसका अंदर ही है. तो IMF और VP, इसका VP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IMF. क्लियर? IMF ज़्यादा होगा तो VP कम होगा. IMF ज़्यादा होगा तो VP लेस होगा. A लेस होगा तो A हाई होगा. क्लियर? दिस इज नोन एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्लियर? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए तो मिथाइल कीटोन एक एग्जाम्पल. और C2H5 ये जो है, इसको IMF जो है एक गेटर है C2H5OH के थे. इसको IMF लेस ज़्यादा नहीं है, इसका ज़्यादा है. ये इजिली भी इवापोरेट होगा, इसको फोर्स ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. क्लियर? सो इन दिस केस यू कैन, in the case of temperature, what I have discussed a little bit ago, in case of temperature you must remember the one equation, the Clausius equations, log
log P1 by P2 इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा H बाय 2.303 R इंटू 1 by T1 minus T2. This is the Clausius equation. You can easily find out the relation log P1 by P2 equals to delta H 2.30 R. R is the what? Universal gas constant. You know the value. I am not discussing out here. ये छोटी सी बात है, शर्म आएगा ये बात, इसका वैल्यू बोलने के लिए 1 by T1 minus 1 by T2. So remind it. Okay. Next, third, Henry's law. What is Henry's law? Henry's law depends upon, it is based on the effect of pressure on solubility. The effect of pressure on solubility. That is, at a given at a constant temperature, the solubility of a solute or solution or solvent is directly proportional to the pressure. That means solubility P is proportional to XB. Clear? Or P, if you delete it, omit it, equals to K into XB. K is the proportionality constant. But out here we used KH as it is related to Henry's law. P equals to KH into XB. Clear? K is known as proportionality constant. की proportionality constant. इसका यूनिट है टॉर और के बार. यूनिट है टॉर और के बार. Clear? So here Henry's law, there are so many demerits also there, corrects also there, and also application, scuba diver, and so many things. The scuba diver is very important for the application of Henry's law. If you want to draw the graph of the Henry's law, how you draw? This is the y-axis, x-axis. It denotes pressure, it denotes volume, dissolution. It will be a straight line. Clear? It will increase, it will increase, it will increase, it will increase. It will be a straight line bar. Okay? That is the slope will be the graph. Clear? भाई साहब अभी होगा राउल्स लॉ. ठीक है? हेनरीज लॉ, क्या क्या नाम है ना, हेनरी, प्यारे कुरी, मैडम कुरी, राउल्स, सब कौन से नाम है ना, बहुत बढ़िया है भाई, इसको इज्जत करो. हैं? ठीक है. राउल्स लॉ क्या है? राउल्स लॉ क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. एक है वोलाटाइल सॉल्यूट, एक है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. द वेपर प्रेशर containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent. Mole fraction of solvent. The PA is directly proportional to XB. Clear? The mole fraction A का directly होगा तो vapor pressure. Clear? Or we can say PA equals to K into XB. Clear? PL K into XB. This is the rules, generalized formula of Raoult's law. But if you want to convey this equation in another way, when XB in case of pure solute, in that case the value of K will be what? So it will be changed a little bit. In case of XA by XB, whatever you can know, you can write out here XA or XA, you can write XA, you can write out here XA. In case of XA, XA का value is, if it is 1, if it is 1, X equals to 1, then what will happen? The K will be, then K will be PA, and this PA will be denoted as P naught A. This will be P naught A. That is the vapor pressure of pure solvent. It is the vapor pressure of pure solvent. Pure solvent. Pure solvent के लिए, if it is 1, XA, mole fraction equals to 1, in that case, K equals to PA equals to P naught A. P naught, it is the vapor pressure of pure solvent. That is right value of PA, that is the K, plus PA
equals to P naught A into XA. Clear? PA equals to P naught A into XA. This is the mathematical expression for the Raoult's law. Clear? Next, भाइयों धीरे धीरे थोड़ा काछे काछे ऐसे दूर दूर क्यों काछे काछे ऐसे तुम हाँ ठीक है थोड़ा for case 1 and for case 2 केस 1 क्या है केस 1 क्या है जो पहले हम ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड जे 1 volatile and 1 is non volatile case. The non volatile के लिए what we earlier given for the solute which is non volatile, 1 is non volatile. When solute is non volatile, in that case what you got PS equals to P naught A into XA plus हमको मिल गया P naught B into XB. So in case of 1 is volatile, another is non-volatile. So this is 0. P naught B and XB equals to 0. That's why total will be 0. So in the for case 1 for non-volatile solute के लिए this will be the equation. Okay? Clear? In case of case 2, I will draw the graph later. I am discussing. The for 2 when both are volatile. See out here. In that case, P naught A, what we told earlier, the partial, okay, mole fraction, the partial vapor pressure is directly proportional to the mole fraction. Okay, mole fraction. Okay, mole fraction के लिए directly proportional. तो केस 2 क्या होगा? PS equals to PA plus PB. PA plus PB. Clear? तुमको clear है? PA plus PB. I know. PS equal to PA plus PB. So what is PA? You know. When the both solutes are volatile. Both are volatile. उसके लिए PA equals to क्या होगा? We know. P naught A into XA plus P naught B into XB. Clear? PA equals to this, PB equals to this. So PS equals to this, P naught A XA plus P naught B XB. P naught B XB. This is the in case of both are volatile solute. Here पर PV, the partial vapor pressure of solvent PA and partial vapor pressure of solute PB. What is PA PB? This is the partial vapor pressure of PA means solute or PB means solvent of solute A, or partial vapor pressure of solvent B. This is the P and PB, and both is PS total pressure equals to partial pressure of A and partial pressure of B. Now I am drawing the graph of this volatile and non-volatile solute. See what is the graph out here? If you draw the graph, what will see? ये टेढ़ा हो जा रहा है भाई. क्या है? उम्र हो जा रहा है ना भाई. हम तो तुम्हारा तारा ज़्यादा उम्र नहीं, हम तो यंग है, उसीलिए इधर उधर घूम रहा है, जो टेढ़ा हो रहा है. देखो 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 ठीक है. देखो ये XA equals to 1, XB equals to 0, XA equal to 1, XB equals to 0. Yeah. Next, I am now XB 1, XA 0. What is denote partial pressure? It is key mole fraction. It is vapor pressure. Clear? It is vapor pressure. It is mole fraction. Suppose increase हो रहा है, directly proportional.
इसमें Pa, ये Pb है, देखो फिर 13 हो रहा है। ये तो पहले का ग्राफ था। अभी क्या होगा हम बताएंगे। ये Pa प्लस Pb है, ये Pa है, ये Pb है, दैट इज XA एंड XB, और ये Pa प्लस B, ये जो नेट है Pa प्लस Pb। क्लियर? Pa प्लस Pb, ये Pb है, ये Pa है। सेम थिंग सर, ये केस 2 है ना? ये केस 2 है, ये केस 2 है, ये केस 1 है। अभी आई विल डिस्कस जस्ट नाउ आफ्टर लिटिल बिट ये व्हाट इज पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन कैसे होगा। सी, डोंट रिक्वायर। ये क्या होगा, डिविएशन, आई विल सी डिविएशन आउट हियर। पॉजिटिव डिविएशन एनलार्ज होगा, नेगेटिव डिविएशन कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्क्वीज्ड होगा नेगेटिव डिविएशन में। तो अभी डिविएशन नहीं, अभी ए है, केस 1 है, ए केस 2 है। तो केस 2 ना, सॉरी दोनों केस 2 है। ये केस 2 है, ये केस 2 है, ए वाला केस 2 है, ए वाला केस 1 है। केस 1 के लिए only it will be 0, that is this is because Pa x equals to 1, xb equals to 0, therefore xb equals to 1 1 or xa equals to 0. Clear? And as this is 0, this will not continue. This is the Pa by XA, this is, and as it is 0, so this will not out here. This is not A plus B. B equals to 0, this is only Pa. Clear? And this is PAB. This is case 2. This is case 1. This is case 1. So this is, and the equation is Pa by PS equals to P naught A XA plus P naught B XB. Clear? For this is the graph. This is Pa plus Pb, that is B. This is Pa, this is Pb. So I will not write out here. This is the whole thing, and this is Pa XA, P naught A XA, and this is P naught B XB. This is P naught B XB. This is the mole fraction, this is the vapor pressure. This indicate, y-axis indicate vapor pressure, this indicate mole fraction. Clear? And this is only case 1 where P naught B and XB is 0. Don't talk. So what is now, next I will discuss about the deviation, positive deviation और negative deviation क्या होता है, क्यों deviation होता है, I will discuss, then I will draw the graph. Here I told earlier that I will discuss about the deviation or why deviation. Before that I am discussing about the deviation के लिए क्या जरूरत है, ideal solution क्या है, non ideal solution क्या है. So what is ideal solution? In the solution which obey the Raoult's law and which does not obey the Raoult's law is known as non-ideal solutions. Okay, there are some certain conditions when it is obey Raoult's law, in which delta H equals to 0, delta V mixing, delta H mixing, delta V mixing equals to 0 होगा, and in this case no heat absorb or evolve in this case, in case of ideal solutions. And in case of non-ideal solution, what will happen? It is totally opposite.
it does not obey the Raoult's law. These are known as the non-ideal solutions. And delta mixing will not be 0. Delta V mixing not be 0. And in this, heat may be evolved. Clear? This is non-ideal and ideal solutions. And non-ideal solution के लिए deviation होगा. In case of both are volatile, one is volatile, other is non-volatile. In that case, the graphs, there is a deviation. And what is the deviation? I will show in this graph. I have discussed here before. I have drawn the graph in both cases, case 1 and case 2. In this case, what is the deviation क्या है? And why deviation? I will discuss just after discussing this graph. Okay? Come. What you know earlier, that this is the actual graph of the vapor pressure and which proportional to the mole fraction. So case 1 का graph ना? हाँ, case 1 का graph है. In this graph, what we know, that is here XA1, XB0, XB1, XA0. In P naught A, this is P naught B. In the earlier section, this is the graph PA plus PB. Out here the deviation will be, in case of this, as a. This will be omitted. In this case also, this is also here, this will be as a. And in this case also, the graph will be as a. It will be as a. ये क्यों हो रहा है? I am discussing later. Clear? And in case of negative deviation, a positive deviation के लिए, और negative deviation के लिए क्या होगा? ये तुम्हारा लाइन था ओरिजिनल, ये जो लाइन था, ये सीधा नीचुने में होगा. क्लियर? ये भी, ये जो था, ये थोड़ा इधर में होगा, ये भी इधर में होगा. That is negative deviation. It is negative deviation. Clear? It may come in the exam. Show the graph positive deviation and negative deviation in case of case 1 and case 2. This is case 2 and this was case 1. Okay? Now come the last point. Why deviation? Deviation क्यों है? Deviation क्यों है? It is very important because deviation के लिए तुमको जानना पड़ेगा. If vapor pressure of is lesser, is lower than the predicted value. Vapor pressure is lesser than the predicted value. It is negative deviation. If vapor pressure is higher than the predicted value, it is positive deviation. Vapor pressure is higher than the predicted value is known as positive deviation. The deviation क्यों है? Deviation because of the intermolecular interaction. The molecular interaction किसके? In the level. Interaction level. It depends upon the molecular interaction level. Interaction level के लिए हो रहा है. तो interaction क्या है? Solvent. Suppose solvent मतलब BB का solvent का लिए, solute के लिए जो interaction होगा. अब AB के लिए solvent के लिए interaction हो गया. The bond between BB AA is greater than, if this bond and this bond, the sum of this bond is greater than the bond between the solute and solvent. So escaping capacity, when this is greater than this, then what will happen? The escaping property will be easy. That is, particles will be easily escape out. Clear? Particle will be escape out. So vapor pressure will be high. The vapor pressure will be high. Then boiling point will be less. Vapor pressure will be high, boiling point will be less. And vapor pressure high means what? Expected vapor pressure. The vapor pressure is high greater than the expected vapor pressure. The expected vapor से
वेपर प्रेशर हाई होने से क्या होगा, एक पॉजिटिव डिविएशन होगा। क्लियर? एंड इफ ए माइनस बी, ए बी का बॉन्ड का जो इंटरेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, escaping out is strong, it does not easily escape out. That's why vapor pressure in that case vapor pressure will be low. Vapor pressure low, that means boiling pressure will be high. Boiling pressure will be high, that means what? That means negative deviation. Bas. Clear? And last thing you must remember that, आ जाएंगे नहीं, that means vapor pressure maximum, boiling point minimum. Suppose जो दोनों जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप जो किया है, इसमें यू हैव टू लर्न द एजियोट्रॉप. व्हाट इज द एजियोट्रॉप सॉल्यूशन? एजियोट्रॉप क्या है क्या बोल रहे हैं? अच्छा सुनो आस्ते. ठीक है. तो ए प्लस बी सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन इधर ए और बी. धर ए और बी एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ए है और बी है. इसका बॉइलिंग पॉइंट हो 108. अब इसका बॉइलिंग पॉइंट है 88 केल्विन. ये दोनों मिला के ए प्लस बी जब सॉल्यूशन मिला होगा, उसका ए बी का बॉइलिंग पॉइंट होगा सपोज 110. तो 110 दैट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन बोथ ऑफ दिस. को भी होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट 80. दैट मीन इधर ए और बी इससे कम और इससे ज़्यादा. तो दोनों में मिला के इससे कम होगा, दोनों मिला के इसके ज़्यादा होगा. तो दिस केस इज हैपनिंग इन केस ऑफ एजियोट्रॉप मिक्सचर. दैट्स वाई डेविएशन विल ऑकर. ओके. HCl है और क्या है? HCl क्या है और क्या है? सपोज देयर आर टू मिक्सचर्स आर देयर. आई एम टेलिंग यू HCl का बॉइलिंग पॉइंट है 188 के. HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188 के. और H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373 के. तो HCl और H2O मिला के जो एजियोट्रॉप मिक्सचर आएगा, उसका जनरलाइज बॉइलिंग पॉइंट H2O से कम होगा और HCl से थोड़ा ज़्यादा होगा. उसको इन बिटवीन 373 एंड 88 के होगा. दिस इज द नोन एज एजियोट्रॉप मिक्सचर. टुडे I draw my ends out here. So go through this very carefully. Note it down and don't forget to subscribe it, like it and share it among your friends.